Sound check. Sound check. Okay, so I have to check where I was. I couldn't join yesterday, so I have to fill up for that. Still, it's sound check. We were doing, I guess, reversing a linked list using recursion, and at this point I got stuck. So can I change the font size here? Okay, now let me find out this. What was the problem number? Yeah, we were following Striver's list. Oh, tomorrow is work from home, so we can chill a little. We can stretch the stream. Hello, hi Perf, how are you? Let me order something to eat first. I'm good, just got off from the work. Last call ended at like 10:30. Late. या यार, लेट नाइट भूख लगता है थोड़ा सा, तो कुछ गंदा खाने का मन नहीं करता, अच्छा ही कुछ खाते. I'll order some milk. Most of the milk out of stock. Yeah, watching is, I'm getting watching, so I should maybe start on something. This recursion, no, not recursion, where was that linked list? Where is linked list? Sliding window, bit learn, yeah, linked list, and then learn 1D linked list. We solve this medium problems, and then reverse a linked list where we got stuck.
Actually submitted using brute force and another approach. We use this approach, reverse linked list. Did we? No, I guess this is not the one where we stuck reverse linked list. Is it the one? Do we have any assignment today or no? ये उस दिन मेरे दिमाग में नहीं गया था. Hello Harsh, how are you? Let me order quickly. Do you guys want to suggest any problem on linked list that I can try? I have solved this problem using two approaches. Recursion I couldn't, but I think it will take some time. I can try it off the stream. If you have any problem suggestion, at least from this driver list or something, it has to be from singly linked list, not W or circular or anything. Which problem should I solve? Length of linked list. There is no problem finding the starting point in linked list. We can do this. Can we do this? There is no milk available. Why so? Is somebody saying something? No. Hi sir, I'm not watching the stream continuously as I'm also studying along with the stream. I will just keep the stream. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. Merge के sorted list LeetCode 23. Merge के sorted list. Problem number 23. Merge के sorted list. It's from hard category. Okay, I will try. Just like the stream, I'll start in 5 minutes solving the problem. Just give me a minute. Let me order some things. Yeah, I'll solve. Just give me a minute, please. I need some cheese. I'm playing this music every time, and every time I'm getting a copyright. At this point, I just don't care. I want some music. What else do I need? Late night convenience fee 15 rupees, handling charge 11. What the fuck? What they are handling?
Why so expensive? It's okay. Yes, sorted. One more question to who is online, like seeing this. I wanted to ask you guys if should I make this a little interactive or maybe interesting or something else, because I have to do Spring Boot practice as well. I can do that, and that would be a little interesting thing rather than solving this question. I can solve this. I'll solve this, but I think creating APIs or some user interface would be a much more happening thing, wouldn't it? Yeah, with using all the AI things, everything built from scratch, we'll design it, we'll build it. That is quite interesting. I also don't like solving only these questions. Okay, I'll solve this one. Detect a cycle. I'll go to this. This is from hard category. Let me read it first. You are given an array of k linked list. Okay, each linked list is sorted in ascending order. Okay, merge all the linked list into one sorted linked list and return it. Mm, okay, 145 135. This is something similar I have done, I guess. In which sort, quick sort or somewhere, where I have merged two different arrays, multiple arrays. What was the question? I did something similar. Yeah, while solving that question, I think I went through this, but it was linked list, hence I skipped it. I'm sure. A quick sort or merge sort. Merge sort I've used. Merge sort and something. Yeah, of course, it's a problem of merge sort plus linked list. It's a good problem. I'll come to this, bro. Who sent this? Shashank. Shashank Bakshi. Give me some time, brother. I'm still in the medium range right now. I just solved some easy problems. I'll come to that. Uh, what is this question? Linked list cycle 2. Given the head of linked list, return the node where the cycle begins. Uh, no, there was one more problem. Find the starting point. Yeah, this is the one. Okay, हमें पता है head of linked list, return the node where the cycle begins. If there is no cycle, return null. Okay, cycle as in this cycle. There is a cycle in a linked list if there is some node in the linked list that can be reached again by continuously following the next pointer. Internally pause is used to denote the index of the node that tells next pointer is connected 0 indexed. It is -1 if there is no cycle. Note that pause is not passed as a parameter. Hmm, ये नहीं समझा. Do not modify the linked list. Okay. Yeah. Yes. I was saying nobody answered. I'll repeat.
I wanted to make this little interesting, so should I also start doing some project like Spring Boot or something, or maybe creating the UI from scratch, so that it will be something throughput will get a project from scratch, because I have to do Spring Boot practice as well, so it will be fun. Maybe on the weekends I can do that. This weekend I'm not available, maybe next weekend. What is this line? There is a cycle in a linked list. Okay. If there is some node in the linked list that can be reached again by continuously following the next pointer. Okay, reached again. Reached again means from 3 we are going to 2, and then 0, then minus 4, and then again we are coming back to 2. We can check for if the node has the same data, but there is a cache that linked lists elements can be unique, so there can be multiple nodes with having two values, so we can't keep a track by just having the node value. Okay, this much I have understood. It's some node in the list that can be reached again by continuously following the next pointer. Internally, pos is used to denote the index of the node that tells next pointer is connected. Okay, 0 indexed. uh, yeah, Spring Boot will be cool as I'm planning to learn. I'm done with Java basics to intermediate and DSA easy and medium, but want to learn Spring Boot and uh, don't know where to start. I've seen many people like they are very good with this LeetCode DSA problems. They have solved almost 100 200 problems, but uh, real life applications they are not very aware of. My case is reverse. Like I have been working, I have created APIs using Node.js. I'm currently working in .NET as well, and front end is my forte. So I've created many systems, scalable, some two scalable systems, two projects, one Node.js and one .NET, a big project, and then multiple front end projects. So I know much hands-on things rather than this problem solving. ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब लगा. इंटरनली पॉस इज यूज टू डिनोट द इंडेक्स ऑफ द नोड that tells next pointer is connected to 0. It is -1 if there is no cycle. Okay, मतलब हर एक node के लिए for every node we have given this pos number, pos number. mm, it is -1 if there is no cycle, 0 if it is next is connected to somewhere. What do you enjoy more, DSA or creating systems, brother? Always like creating system. And today I'll tell you one real life problem that we went into. There is a messaging system in our product, and consider this as a customer and I have to tell you in easy terms, customer and supplier network that we have. One customer can have multiple suppliers. Okay, so there is a conversation going on between them regarding some specific problems. Okay, so while creating these systems, nobody thought of that we will reach a point where they have to continuously communicate in between them, and then when like customer texted something, we have to system two different microservices for that. Suppliers microservices different, its database is different, and customers database is different, and we communicate in between them. Okay, so because the databases are different, there is just one bug which is bugging us, is like how to know a message is read. Okay, when the communication is between customer to customer or customer to other customers,
Then it is like we can read, we have a simple column is seen, and we can mark it like true false based on if the message is seen or not. But because the systems for supplier and database is completely different, we can always communicate between them. But just for this has seen, if the messages has seen by the supplier or by the customer, there is no communication, and hence we have to close that, considering uh, it is like a technical blocker we have, and we can't do this thing. We have to implement something there, something here, a long process just to get that has message seen true. So that is something, when such problems you enjoy solving when you work on the systems. uh, what do you enjoy more, DSA or creating systems, or pub sub? What is pub sub? This I understood. Pause 0, like if 3 is pointing to 2, that means the pause for this node is 0. 2 is pointing to 0, that means pause for this is 0, and then it is 0 again. But minus 4 is pointing to 2. uh, oh no, I didn't understand. Pointer is connect. Let me read it again. Internally, POS is used to denote the index of the node that tells next pointer is connected to 0. It is minus 1 if there is no cycle. Okay, just for the tell. Internally, pause is, just a second, I'll read your message. Internally, pause is used to denote the index of the node that tells next pointer is connected to 0 indexed. It is minus 1 if there is no cycle. Note that pause is not passed as a parameter. Okay. Okay, we have to return, then what? Input head. Oh shit. Input is 3 to 0 minus 4, pause is 1, tell connects to the node index 1. Okay, there is a cycle. Okay, 1 denotes which indexed node it is connected to. Minus 1 when it is connected to nothing, there is no cycle. There is a cycle in the linked list where tell connects to the second node, which is 1. And then head 1 to pause 0, it is connected to 0. Tail connects to node 0. There is a cycle in the linked list where tail connects to the first node. Head is 1, pause is minus 1, no cycle, there is no cycle in the linked list 1. Okay, we can return, use this as some edge case. Constraint, the number of nodes in the linked list range 0 to 10 raised to, I've got a call, just a second. Hello, आलात का वरती शालीमार, एक सेकंड, एक सेकंड. शालीमार एलिगन्स बिल्डिंगचं नाव आहे. Sorry guys, I'll have to again. Bro, what do you do? What you're doing, DSA or creating system? Currently, I'm like solving the problem. At work, I design, write code, do some designs. Bro, system design pattern,
Everything is fun. Yeah, I missed some text in between, I guess. Did I miss some text? Is it really hard to do DSA when you have messages coming? Oh, I missed many messages. Correct. Looks like. What do you? I was here. Okay. What do you create in system? I answered this. Correct. Looks like a good problem to have. The thing you just explained is classic publisher subscriber. Yeah, publish subscriber case. Yeah, where one need to update other. Yes, I'm learning system design. Is it worth it? I'm second year. I'll answer you, Shashank, this question. It is very. We discussed this today. Uh, I'm learning system. Is it worth it? Yeah, I'll answer. Is it really hard to do DSA when you have messages? No, no, no. I have to train my mind in such a way that in interview also I can do that. Bro, what you doing creating? No, I answered this. Bro, system design pattern, everything is fun. Today, like we were discussing, and it was like a very how market condition is shifting right now. Are my screen is stuck on this. This OBS fucking hell. My screen was stuck. Sorry for that. Yeah, so market dimensions are changing so drastically, like within the next 1 2 years only. Like maybe take for safety 3 years. The dynamics are going to change in such a way that companies are not going to require conventional software developers, like the one who only writes code, one who only knows one language, and whose role is like writing a specific kind of code. Bro, give me some good channel names to learn coding. Neat code I was following like for this kind of scenes. I'm not sure. Recently I haven't followed any channel specifically. I'm more into kind of reading kind of guy. I read to the documents. So what I was saying, market dimensions are changing and system design becoming the core of everything. So as an engineer, you would be expected to know only not only end-to-end systems, like how a system would work from front end to back end to deployments, how server management, server health, everything you should know. And companies would expect you, like you are in first year, second year, third year students. So when the time you will be uh, giving your interviews, preparing for the interviews, the companies would expect from you to know the systems end to end, because the resources, number of resources available right now are huge. The AI interference within the work is huge. So just asking you the simple coding questions and how would you do this, do that, checking your basic logic, I don't think companies would be more relied on that. They would start asking you something about not that deep, but at least you should know how systems, how caching works, charting, these concepts, system health, server health, uh, how would you manage when the sudden users
crash into our system, so how would you handle these, everything, such kind of things they would ask you. How much AI do you use in your job? I i think you are in college. What's your name? Just browse. Just browsing. What's your name? uh, I'll tell you. The answer will shock you. It is like 100% AI we have to use, and we are using, and it is mandatory. There is no option to not to use AI or something. The companies had, my company at least, made mandatory to use 100% AI in the code. Shit, I got some work, I guess. Yeah, so focus on like knowing, like focus on being an engineer who knows all the systems end to end. Just not like uh, I know only Python, I like this, I like Java, I like this. No, no. Yeah, bro. 100%. And not just my company, I for sure I know there are many companies who are asking to write code using 100% AI, because earlier, like a year ago, 2 year ago, a task is supposed to be done maybe by one developer in 2 weeks. The companies are expecting to do that same task in 2 days. So that's how they are scaling the efficiency. That's how they are uh, trying to like give the customer more features within short period of time. Yeah, chat gpt. The world, yeah, we are feeling guilty because we think we are still thinking that it's a shortcut that we are taking. But if you uh, I'm trying to, I also feel the same way, like the guilty feeling is still there, but it's a part of evolution. The things that every, see, every new generation has plus x% of resources available. Like when I was in college, and now that guys, you guys are in college, you have at least 10% more resources available. So every generation will have more resources. And then the tasks, how would I communicate in shorter sentence? It's like the tasks that are not so important will be done by AI, and the tasks which are more important will be done by human intelligence. So we the code has been written so much in the world that AI has already learned through what are the good code and how to write good code. So I don't think we have to put our mind too much into that, like knowing the syntax or writing the good code. We have to build now on top of that. Like the new generation will have to think on top of what already has been built. There is no need to write you the code like how this syntax, oh I missed a semicolon. No, 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 that's now completely irrelevant. You will have to think how this system will be more scalable, how this system, why this system still needs an user interface, why people are still searching for an option. For example, I'm searching here, okay, there is where is my profile? Oh, there is my profile, I have to go there, and this, no, why don't there is a prompt again, prompt for everything. Day by day every user interface uh, will cease to existence till the point there is only a single, like our phones, how phones evolved. There was a time the phone had multiple buttons, then it came to just single button. It was a revolution. Like, okay, the first iPhone made all the screen and just a single button. Similarly, the operating systems will also evolve in a such a way that there will be only one thing that it will do, is like getting the instructions from the user, and it will automatically do everything for us. Like
I have to send text. I'll just write. Maybe I don't know how it will be, but I'm just assuming I'll write. Okay, say we'll meet at this. I'm texting a friend. We'll meet at this time. Uh, AI will know. I have to send the text to this person, and it will send, and his AI assistant will reply me. So things are going to change very rapidly. We are also not sure how it is. So they track also this on every ticket. And do you find it helpful while working? This is fluid cycle detection. About the problem, I forgot about the problem while talking. They don't track. There is no way to track like uh, what code is written by AI and what's written by us. Every code is written by AI is written under our name. If you check under the Git lens shows our name. It's not shows by Copilot has written that. We have to verify that. The company says whatever the code is written by Copilot, it might not be written by you, but you are the owner of that code. That is their statement. So we have to take responsibility, and I have seen like many of my colleagues also. Sometimes Copilot write a very good or maybe a different logic that we while reading might not understand in one reading or two readings as well. So sometimes due to the crunch of time we just push that code because it's working. We tested, so it's working fine, there's no issue. We push that code, and I have seen like almost 60-70% of such code is getting pushed to the product, and the product is like turning into AI code. Which is supposed to be checked by developers, but it is not, because companies will put pressure on you like this much time you have to do that. Correct. Apple also is trying to end the phones with time. Everything will be on speech, it seems. And with mold bot, it looks very, what is mold? Acha, mold bot, yeah, it looks very promising too. It is scary. I don't think would be a good word to use it. We are just scared of changes, but changes will be there. Can you solve this? Is secondary. We have to internally detect pause. Okay, so to which node it is pointing to, considering the number of nodes in the linked list is 10 to the. Bro, where do you work, by the way? I shouldn't be saying this on the stream, so you can go and check out my LinkedIn profile. You can see there. Then pos is -1 or valid index linked list. Okay, if pos is not equal to -1, then there is a cycle. So what do we have to return? Given the head of linked list, return the node where the cycle begins. We have to return pos number, not the pos number, that node. So we need a function where if we pass a pos number, it should return us a node. That is required. But how would we detect a pos number, and how would we detect, because is there a condition like the every element will be different? Because that is necessary. If not, then how will we detect? Bro, where do you work, by the way? You can check my LinkedIn, and you can. Oh, it's a different person. Harshit. What's your name? Harshit Rawat. Yeah, sure. Do like the stream, but it's very important for me because I want to connect to the same similar minded people.
Whoever is visiting for the first time, please do like. And if you are interested in such solving such questions, LeetCode or coding or something somewhere, then the then the channel will be for you. So do like the channel. Hey, sorry, do like the stream. Okay, I'll first write maybe. So do I need this or no? Yeah, list node and return pause node. I'll give this as this, and we will take in pause as input, and we'll return a node from this one. You can call it here, but now for the pause, do not modify the linked list. There is a cycle in the linked list. There is some node in the list that can be reached again. And can we check node? Your responses and approaches made me happy and optimistic about the changes in which we are in. Yeah, we have to be optimistic. There is no other option. Do like this stream, guys, please. Come on. Does anyone know how this pause is going to come into picture? I can try the logic, whether it is right or wrong. I can just try the list node value. Based on that, I can check. Pause 0, and then next is pause. How we can do this? I'm still so there is this linked list. Okay, so this is pointing this, and this is pointing to this. Okay, somebody texted something. Try fast and slow pointer. Don't. Oh. Okay. I'll just go with the first brute force that I can think of. I'm thinking of about how this pause. Maybe how can I get the pause? This will be index 1. So what would be its index 1 and pause? Index 0 and pause will be pointing to 0, 1, 2, 3. So its pause will be 1. Is it? Then its pause is 2. Its pause is 3, and its pause is 1. Okay, so normally pause will start with 1 because head's pause will be 1. So if head dot next is not equal to null, okay, then maybe in this case
will increase pos plus plus. We have to store this pos numbers as well. Okay, so yeah, okay, understood. We can store it in some list maybe. Okay, so we'll store existing pos, so first pos will be here. So we'll store pos1, so it is not null. Then it's we came to this one, so the pos will be like pos is 2, then pos is 3. Okay, then this is pos1, and then we are getting again 2, so that means it is repeat. There's 2 already present, there's again 2 pos. But how the fuck we will know that it's pointing to this? To know that head next is not equal to null, and how we will know that it's pointing to this particular index? Do we have to remember all the nodes? Do we need to remember all the nodes in that case? I want to know that this is pointing to this node. I think there is chance of using like list or something where there we can track the unique things. Okay, which was the problem? Let's see what's the brute force approach is. I'll get some water quickly. I went and watching has increased. Music stopped. The starting point of loop of the linked list is the first node we visit twice during its travel, sir. It's the point where we realize that we are no longer moving forward in the list but rather entering a cycle. Okay. Traverse through the linked list by assigning a temporary node to head and moving to the next node repeatedly until reaching null. While traversing, keep a record of the visited nodes using map data set. Yeah, there's no way to solve it without using something like that. Storing the entire node in the map is necessary to differentiate between the nodes with the same value but different positions. Yeah,
we have to use map. So let's read about map in Java. Why people are quickly subscribing, I'm not sure about that. I've like gained 10 subscribers. Java map interface. Put gate revoke this duplicates allowed list map keys no values yes. Yeah. Where is the example? Hash map. So how can we store a node in this one? Maybe this type will be list node. First is like key and the second is value. Is it? Yeah, first is key and second is value. So first will be number integer and second will be list node. Okay, next, what is next in this one? Storing the entire node in the map is necessary to differentiate between nodes with the same value but different position, ensuring a proper detection of the cycles instead of duplicates. If node already exists in the map, this confirms a loop. If the traveler reaches the end of the list, null, it means loop. Okay. So what it's saying is like we need a map. Okay, so we'll have this hash map, okay, of type integer comma list node. Okay, this will have, and for the linked list, while this current will take current as head is not equal to null, we have to like do the operation. Okay, then in that case, for first and foremost we have to add like I'll name it as a map. Okay, so we have to add each and every element to this map. I don't know exact function, but we'll do list, we'll do current. Okay, we'll add current to this map, current, but wait, and pause, will add pause and then current. How we were calculating pause is like pause plus plus. So pause is equal to 0 first and foremost. Pause is 0, but then we'll increase pause plus plus here. Okay, this is first step, this is second step. We'll add to this. Now before adding, okay, before adding, wait, pause plus plus, we have to check if
map dot present. I don't know function, I'm just writing it here. Present this current. Okay, if it's present then it's done. It's done. We have to return the pause, so we'll return the function that we have written. What was the function name that we wrote? This function, return pause node. So we'll return this pause node function. Okay, and we'll pass pause to this and it will give us a list node. If not, then we'll have to do map dot add what map dot add this current deva pause comma current. If there is no cycle, then what we have to return? If there is no cycle, pause is not passed as a parameter. Acha, there is a output, tail connects to this. Output is a string. Output is a string, but then the function given here is this, so its type will be string. Oh, but it's saying it has to return a list node. What? Is this question correct here? The boilerplate code is correct or no? Whatever. Then else we return this no cycle. Okay, my handwriting can be LeetCode question no. Ranjit is back. Hello Ranjit. But seen in this question, the output is supposed to be a string, tail connects to node index 0, no cycle, something like this. But then the return type of this function is list node. कितना नंबर क्वेश्चन है ये इसका नंबर है 142. Do I have to change? Let me try and just run it as it is. I'll just return this and just have to see what's the return type over here. What error expected? Return list node, not a statement. अरे यार रिटर्न में पूरा पागल हो गया. ये नहीं चाहिए हमें फिलहाल. आउटपुट ये कैसे आया? बट मैंने ये तो दिया ही नहीं. टेल कनेक्ट्स टू नोड इंडेक्स 0. व्हाट दिस फंक्शन हैज़ टू रिटर्न?
Acha, we have to return the node and rest it calculates. Okay, whatever. We'll try to execute our code what we have thought. First we need a hash map. Okay, so the question is correct, Ranjish. Rani, your name is Ranit. Yeah, sorry for that. I don't know how to use hash map. So hash map integer, and list node will be like key and value pair. Okay, new hash map with the same integer comma list node. Okay, so this is fine, and then we need a loop while node, but before that we'll take list node current as usual, which is pointing to head, or which has a reference of head for now, and which we will iterate because we don't have to change the list. Okay, so while current dot next is not equal to null, we have to run the loop. Okay, in this loop the question is, should we increase the pause first? We need int pause also initialized to 0. There will be no pause 0. There can be pause 0. Fuck, there can be pause 0. So should I initialize with -1? Can I initialize with -1? And if so, maybe pause plus plus. Okay, and then if map dot क्या क्या फंक्शंस है भाई मैप में? We have to find by the key, not by the value. So ये जो है this one कहाँ गया? ये तो बंद हो जा. This one ये उल्टा चाहिए. ये उल्टा चाहिए भाई साहब, क्योंकि हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. की से, वैल्यू से नहीं मेरे ख्याल से. So it should be like this, and what we have to do, we have to like add head in this one. So what we can do here, map dot put is a function, not add, and list node head, and pause is like 0. Do we need a condition here? If head is not null, then do did someone texted something? No, fine. People are not interested in when I'm solving the question. Hope my audio is audible. Map.put pause plus plus. Okay, and now
think pos plus plus here is required. Map dot get current. Okay. Yeah, then in this case return current, else map dot put current comma pos, and after this pos plus plus and current equal to current dot next, but not every statement is returning this. Okay, it will say this error not there is, or there is no error, but no, it will say every statement should return from only one. We're returning this is not valid. What we can use it here? If not equal to -1, else map dot put current pos. ठीक है, मेरे को इधर गलत नहीं लग रहा, ये वाला स्टेटमेंट ही गलत है अपना। रिटर्न लास्ट 35 पे अगर ये नहीं तो क्या रिटर्न करे? Only the base case is getting. What do we have to return for? What do we need to return for this -1? हाँ, ये कब पता चलेगा इसको नो साइकिल वाला कंडीशन? ये भी गलत है, ये सही है। एक हैश मैप बनाया, अपन that list node current head, this is right, in pos -1, then if head is not equal to null, pos plus plus, okay. If head dot next equal to null, then
is else this pos plus plus this, then while current dot next not equal to null if map may we have added map dot if map dot get current not equal to -1 return current, else map dot put current pos plus plus current equal to current next. There is क्या भाई this is at least this condition should pass na. What we have to send it here, yeah, okay, null we have to send, specify it, the question should specify this. At least this condition is passed. For anything, okay, the earlier condition was correct, or like even if head is equal to null or head dot next equal to null. Okay, understood. What all functions we have in hash map? Do we have API documentation here? Map interface and object, this okay. Compute, इतना सब तो गिग्स और गिग्स में है ही नहीं, गिग्स और गिग्स तो एकदम चूतिया है फिर कोई. Hash code. What are abstract methods? Clear constant key, constant value. Contains key, returns true if map contains a mapping for a specifier. We can use this directly, na? Contains key or contains value. So we can use this if instead of this map dot contains key. Then loop is found and return current. This much condition is correct, I'm sure, but this while conditions, will this work? We need to do this first.
देयर कैन बी कंडीशन व्हेन नेक्स्ट, पहला ही सही था अपना, करंट नॉट इक्वल टू नल। एंड यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो नल चाहिए क्योंकि वो पहले पता नहीं था अपने को। ओके एंड I don't think there is a need to make complicated using this. There is a hash set as well. Class interface. My teacher taught me how to, while in college, how to use this documentation. Is there set? Overview. Java set. किसमें होता है भाई ये सब डॉक्यूमेंटेशन? कोई एक पैकेज होता है जावा। Util में I guess. Can use a simple set. Will remove all the logic, all the pause logic. So it's saying we don't need all the pause logic, so we'll remove this and maybe visited, give the name visited. Okay, we'll just copy this and that's it. We don't need this. Then we also don't need this then. And visited dot contains key, then map, no it's a visited, and then add
एंड करंट, पॉज ने फालतू में दिमाग चाट लिया अपना ना, ये नहीं चाहिए अपने को। एंड नल, अब ये क्वेश्चन है कि ये पहले नेक्स्ट होए कि ये ऐड करे करंट नेक्स्ट। लेट्स सी, compilation error, visited contents cannot find symbol। contents की क्या है भाई इसमें, instance methods, contains is the one, returns true if this set contains a specific element। contains, contains है क्या भाई इसमें, ओके कंटेंट्स है यहाँ पे। अरे भाई साहब, पॉज का लॉजिक फालतू में दे रखा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वी वर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट, इट्स गुड, इट्स गुड, वी वर ऑलमोस्ट देयर, मतलब हमने लॉजिक सही सोचा। ब्रूट फोर्स का हो कुछ नहीं, कोई नहीं बात, लेकिन ब्रूट फोर्स तो सही, लेकिन लॉजिक तो सही था अपना। बस ये हेड कौन सा नल और कौन सा क्या, ये गड़बड़ी किया था अपन ने, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन में नल रिटर्न करना इन लोगों ने लिखा ही नहीं प्रॉब्लम में कि नल रिटर्न करोगे तो हम नो साइकिल प्रिंट कराएंगे। कैसे पता चलेगा, रिटर्न टाइप लिस्ट नोड है तो मैं नल कैसे कर रहा हूँ। ये टेस्ट करना पड़ा अपने को। और फिर ये फालतू में पॉज का लॉजिक लगा रहे थे हम, पॉज का लॉजिक इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, दैट्स व्हाट, पॉज का लॉजिक फालतू में दिमाग चाट रहे थे हम। एक सिंपल सा सेट लिया, देन एक अपना एज यूजुअल लिस्ट नोड करंट में हेड ले लिया, देन ये कंडीशन दे रखी है जो नो साइकिल वाली, हेड इक्वल टू नल है या उसका नेक्स्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो सीधा ये करता, मतलब ये सिंगल वाला है कि उसमें नो साइकिल वाला कंडीशन वो पहले डाल दिया। फिर अपना लूप अपन लिंक लिस्ट पे इटरेट कर रहे हैं। ये विजिटेड में हम ऐड करते जाएंगे, अगर विजिटेड में करंट है तो फिर वो दे दो, मतलब वो साइकिल फाउंड आउट हो गया अपने को, मतलब ऑलरेडी अपने सेट में विजिटेड वाले सेट में वो एलिमेंट है, तो ख़त्म यहाँ पे कहानी। नहीं तो फिर ऐड करो करंट को और करंट नेक्स्ट करो, और अगर नहीं मिला एंड में तो नल रिटर्न कर दो, दैट्स इट। दैट वाज सो सिंपल। सबमिट करते हैं, देखते सब टेस्ट केसेस पास हो रहे क्या। ओके, द सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड बट इट्स नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इट वाज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। कैन यू सॉल्व इट यूजिंग O1 बिग ऑफ O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, हम हर एक एलिमेंट को एक एक बार विजिट कर रहे, तो बिग ऑफ O(n) हो गया मेरे ख्याल से, बिग ऑफ O(n) है इसका, अपने को वन का कैसे होगा भाई ये। अब वो सोचते हैं कि वन का कैसे होगा, मतलब लूप ही नहीं चाहिए अपने को। इन शॉर्ट, बिना लूप के कैसे करेंगे फिर, अपने को इटरेट नहीं करना है लिंक लिस्ट के। मेरा आवाज़ सब ठीक ठाक आ रहा है ना, मैंने देखा नहीं, बहुत टाइम से टेस्ट नहीं किया स्ट्रीम। जो भी लोग नए आ रहे हैं स्ट्रीम पे, प्लीज़ डू लाइक। अब वो सोचते हैं कि वन का कैसे होगा, मतलब ठीक है, आवाज़ सब आ रही है। डू लाइक द स्ट्रीम इफ़ यू आर इनटू लाइक सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, LeetCode और एनीथिंग अबाउट द कोडिंग। अभी भी मैं जस्ट आई वाज डिस्कसिंग विद अदर गाइज सम AI stuff and everything, and about to start on some Spring Boot project as well from the scratch. If you are into these things, this kind of shit, then do hit the like button, and if not, you don't know what's going on, then just come and visit and go, no need to like and subscribe, okay? So I want to build the community on the community, and I want to tell you that there is actually a community tab opened on this channel. So I have just activated that. Whatever the question you have or something you want to ask, you can just add in that community. There's no restriction, I have put no restriction, you can literally add curse words in there. But do like
first and foremost is do like the stream. That's what important. I think I'm becoming more like a streamer now. ओ ऑफ वन का कैसे करे, उसके लिए पहले कुछ खाना पड़ेगा यार. मैं कुछ लेके आया खाने के लिए. जस्ट अ मिनट. Okay, I'm back. uh, I'm back. So now we have to think about how we can solve it without this loop. Okay, I'm erasing this. ये पॉज का लॉजिक हटा दो भाई, ये सब नहीं चाहिए. पॉज का लॉजिक सिंपल अपना ये है, और ये साइकिल. ठीक है. अभी बिना इसका कैसे करेंगे हम? हर एक नोड, मतलब ये नोड पे आते ही हमें पता चले, लेकिन हम इटरेट नहीं करना चाह रहे. इटरेट नहीं करना है हमें, तो कैसे करेंगे भाई बिना इटरेशन के? लिंक लिस्ट के थ्रू तो गो थ्रू करना पड़ेगा अपने को. कुछ लेके आया खाने के लिए.
what can we somebody said a while ago that use two pointers na in the chat. Let me see the chat. Your responses approximate. Okay, sure, first try. किसने बोला था भाई, क्या बोला, कुछ तो सजेस्ट किया था. करेक्ट. Try fast and slow pointers approach. Okay, can we? Okay, so maybe पहला point A and B two pointers लेते हैं हम. First ऐसे जाएगा, then this. Okay, and fast pointer. ये क्या हो गया भाई? And fast pointer यहाँ से यहाँ, then कहाँ जाएगा भाई ये? उसको जगह ही नहीं कहीं जाने के लिए. If this is null, then end है, end. टू पॉइंटर्स कैसे यूज करेंगे भाई? इसमें कौन बोल रहा था वो? फास्ट एंड स्लो पॉइंटर. गलती कर रहा हूँ क्या मैं कुछ? फिर से अगर वो बंदा ऑनलाइन है तो मेरे को थोड़ा बता दे भाई, टू पॉइंटर्स का कैसे फास्ट स्लो पॉइंटर. ठीक है. this and maybe we'll take this. Okay. ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा ही आएगा मेरे ख्याल से, है ना. और फिर फास्ट पॉइंटर वाला अपना सीधा यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो 5 वाले के लिए फुलफिल कर गया. ठीक है. अब भाई अगर मैं सेम लेता हूँ 4 का, 4 में नहीं हो पा रहा है वो, 1 2 3 4. ठीक है. this and maybe we'll take this. Okay, so now slow pointer will go from here 1 2 3 and 4. यहाँ आ गया. अब फास्ट पॉइंटर यहाँ गया, अब वो यहाँ जाएगा ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आएगा कैसे वापस?
क्वेश्चन ने क्या बोला है यहाँ पे? भाई ये कैसन बा, ये वाला समझा ब्रूट फोर्स अपने को। ये क्वेश्चन नहीं था वो। यही था क्वेश्चन। इतना मुश्किल डायग्राम की कुछ ज़रूरत नहीं थी फालतू में। ऑप्टिमल अप्रोच which becomes quite large as the linked list length grows. Slow fast, slow came here, fast came here. Slow came here, fast came here. Then fast will come to 7. Then fast will come to 9. Then fast will come to 9 to कहाँ भाई? Oh, is it? लूप में घूमेगा। Initialize 2 pointers fast and slow to the head of the linked list. ठीक है, समझ गया। Next, fast continue the travel until one of the following conditions is met. Fast or fast dot next reaches to the end of the linked list, it becomes null. In this case, there is no loop in the linked list and the algorithm terminates by returning null. Fast and meet at the same node, but ये कंडीशन मेरे को पूछना पड़ेगा। In this case, fast and slow pointers will not meet. सर 6 को डिलॉयट का इंटरव्यू है, फर्स्ट राउंड कोडिंग का है, तो क्या बस कोडिंग आएगा, एमसीक्यू भी आएगा? एमसीक्यू भी आता है भाई, ये किसी को भी नहीं पता होता है क्या आएगा, लेकिन उसमें 3 पैटर्न वाले क्वेश्चंस, मतलब 3 पैटर्न वाले ये होता है। I guess Neetu has went, but
If you are still there, I can explain to you. नीतू यादव, MCQ भी आता है भाई। और वो मैजिक इंडिया ब्रिक्स, क्या नाम है उस साइट का, उस पे से तुम्हें वो सॉल्व करते रहना पड़ेगा क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें बिल्कुल गलत मत करना, MCQ आता है मोस्टली, तुम्हें मिल भी जाएंगे क्वेश्चंस। डिलॉयट का है तो मतलब बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, तो तुम्हें इजीली इधर उधर सब उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन कोडिंग का होगा या दो क्वेश्चंस कोडिंग के हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कितने घंटे का एग्ज़ाम है। अगर वो तुम बता दोगे तो आप अपन सर्च कर सकते हैं कि तुम्हारा कैसा होगा एग्जैक्ट एग्ज़ाम। मैसेज डाल के रखता हूँ नीतू यादव, जब भी तुम आओ तो देख लेना। इंडिया बिक्स की साइट का नाम है मेरे ख्याल से, इंडिया बिक्स या कुछ तो नाम है उसका। डिलॉयट का एग्ज़ाम तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएगा भाई, तुम्हें हो सकता है कि क्वेश्चंस भी मिल जाए, क्वेश्चंस करके कर लेना वो देख के। ChatGPT is saying my diagram is wrong. कैसे रॉन्ग है भाई? अरे जब ये मैसेज आता है ना, उसके लिए कुछ साउंड होना चाहिए। कैन आई ऐड सम साउंड और समथिंग? मोटरेशन, टाइम स्टैम्प्स, रिएक्शंस, you want timestamps, okay. ना ना, हमारा नाम नहीं है इसमें। I have to explain ChatGPT my diagram. Second is fast pointer, and the which is ending at nothing. So I marked it as a cross at the end, and there's a cycle from fourth note to second note. Is a tiny step table.
स्टेप 0 0 1 2 3 स्लो 1 2 3 4 ओके फास्ट 1 3 ए व्हाट द फक 1 3 how it's coming back to 2 and 4 कुछ तो गड़बड़ है भाई ये यहाँ इसका नेक्स्ट ये है इसका नेक्स्ट ये है ना कि इसका नेक्स्ट ये है अबे यार अबे यार अबे यार मैं क्या फालतू इंसान हो भाई हम क्या ही फालतू इंसान है ये यहाँ जाएगा ही नहीं ये साइकिल है भाई ये यहाँ नहीं जाएगा ओके लेट मी रीइटरेट दी फास्ट लेट मी रीइटरेट फास्ट वाले का ये ठीक है फास्ट वाला पॉइंटर कैसे जाएगा फास्ट वाला पॉइंटर लेट मी चेंज कलर इफ आई कैन चेंज द कलर रेड ओके फास्ट वाला यहाँ जाएगा फिर मैं सोच रहा था यहाँ जाके एंड होगा नहीं ये पहला एलिमेंट ये और दूसरा ये है तो ये यहाँ ऐसे आएगा यहाँ पे देन अगेन यहाँ जाएगा फिर ये पहला एलिमेंट हुआ ये दूसरा एलिमेंट हुआ और फिर यहाँ आएगा सॉरी अगेन रॉन्ग फिर यहाँ आएगा फिर 1 2 अच्छा ये सर्कल में घूमेगा तो इसको ड्रॉ करने का आसान तरीका ये है तो ये ऐसे दिखेगा 1 2 3 एंड 4 ठीक है 1 2 3 एंड 4 जो कि हम ड्राइंग के कारण गलती कर रहे थे मतलब हम विजुअलाइज वैसे नहीं कर पा रहे थे तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे जाएगा ये जाएगा पहले यहाँ ठीक है बहुत ही छोटा एरो है ये दैट्स व्हाट शी सेड दिस देन दिस ओके देन दिस एंड देन दिस ऐसे चलेगा वो तो अभी अपना पॉइंटर कैसे चलेगा फिर फास्ट पॉइंटर जाएगा 1 से 3 जाएगा पहले 3 से 2 आएगा 2 से फिर 1 2 फिर 4 जाएगा ऐसे जाएगा भाई अब समझा मैं 360 IQ अब समझा भाई अरे इतने लोग मैसेज कर दिए ये क्या है भाई ये पहली बार चैनल देखा वो भी जावा के 3 वर्जन है मर जा लुट जावा भाई मैंने तो सैप में ये बोला था सिलेक्शन हो गई मतलब भाई सच में हम भी यही बोलेंगे फिर फास्ट वाला पॉइंटर फ्लैश की तरह जाएगा ऐसे कमेंट पढ़ लो मेरा इतनी मेहनत से लिख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ सॉरी मैं थोड़ा सॉल्यूशन में बह गया था ये ज़िंदगी में कहाँ काम आती है लिंक लिस्ट
भाई 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। लॉल भाई, आई गेस तुम वेट करके निकल गए। मनी टेक्नो। भाई क्लिक नहीं हो रहा था लॉजिक। लीड कोड कहाँ यू है, सॉरी लिंक लिस्ट ज़िंदगी में कहाँ यूज़ होता है पता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है लिंक लिस्ट का? लिंक लिस्ट एल्गोरिदम पे बेस्ट, सबसे बेस्ट एक जो ये चीज़ है वो है लिंक्डइन। नाम ही लिंक लिस्ट है उसका। अरे वो हिंदी में था 1 2 3 4 राइम करने की। नाइस नाइस यार, यू मेड मी लाफ, नाइस। सैप में सिलेक्शन हो गया, जावा मर जावा मिट जावा बोल के कुछ भी भाई, मतलब लिखना है तो कुछ भी लिख दोगे ऐसे। हम ऐसे ही मरवा रहे हैं यहाँ पे। असल ज़िंदगी में पता नहीं लिंक लिस्ट कहाँ यूज़ होने वाला है, लेकिन लिंक्डइन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे अपने को दिखता है कि अगर हम दोनों कनेक्टेड है तो यू आर माई फर्स्ट नोड। तुम किसी और से, तुम भी 100 लोगों से कनेक्टेड होगे तो वो भी आगे थर्ड थर्ड सेकंड लिस्ट देन थर्ड लिस्ट, ऐसे मतलब वो दिखाता है, थर्ड तक ही दिखाता है वो, हालांकि अपने को कि हम कहाँ तक कनेक्टेड है। यू आर म्यूचुअल नॉट फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन। सो वहाँ पे लिंक लिस्ट यूज़ होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, लॉजिक तो समझ में आ गया भाई, अभी कोड लिखते हैं। खाना खाने के बाद भी भूख लगता है साला। वो अब निकल दिया, वो अब निकाल दिया उन्होंने, कंपनी ने। नो। ओह सैड भाई। तो आप कहाँ जॉब कर रहे हो? आप कहीं जॉब कर रहे हो, क्या सीन है अभी तुम्हारा? अभी सर्चिंग। ओ ओके। तो इमीडिएट ज्वाइनर हो तुम? तुम्हें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी भाई, 9 साल का सैप का एक्सपीरियंस है तो भाई लाजवाब है। मैं तो बोलूँगा सही है। मैंने मैंने रिसेंटली ही ट्राई किया था अपने प्रोफाइल पे, मैंने मतलब स्विच करने से पहले मैंने किया था ट्राई की। कंपनी ने निकाल दिया वैसे दिखाया मैंने, और देख रहा था तो बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, तो मेरे को लगा ठीक है भाई, मतलब इन केस कुछ बुरा होता है तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर सर्चिंग जर्नी ब्रो। ये सब चीज़ें तुम्हें इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो लाइक कर सकते हो स्ट्रीम को। अभी अपने को यूज़ करना है पॉइंटर, ये बताना होता है कि निकाल दिया है। नहीं, इमीडिएट आया, मैं इमीडिएट जॉइनर बोलने का भाई। एचआर ऐसे बोलते हैं कि यहाँ प्रोफाइल पे तो तुम्हारा दिख रहा है कि यू हैव लेफ्ट द, मतलब तुम्हारा काम हो गया है कंपनी से, दैट योर लास्ट वर्किंग डे वाज दिस 12 दिसंबर। तब बोलने का, अगर मैं तो ना बोलता हूँ कि ये नहीं, मैं कुछ और, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता स्ट्रीम पे, लेकिन ये बोल सकते हैं हाँ मैंने लास्ट वर्किंग डे मेरा वही था, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर दिस रोल। तो वो पूछेंगे तुमसे कि क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारा, क्या करंट सैलरी है, क्या चाहिए। अगर तुम उनको बोलोगे निकाल दिया है तो वो फिर फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी मजबूरी है। उनको नहीं दिखाना है कि तुम्हारी मजबूरी है। अपने को चाहिए 2 पॉइंटर, फास्ट एंड स्लो। लिस्ट नोड एक स्लो जो हेड को पॉइंट करेगा, और दूसरा भी
यार ये कीबोर्ड दिखता नहीं माइक की वजह से, मुझे लिस्ट नोड ये सेटअप कुछ चेंज करना पड़ेगा मेरे को। लिस्ट नोड फास्ट जो भी हेड को पॉइंट करेगा। यार मेरी प्रोफाइल क्यूए की है, वो पूछेंगे नहीं इमीडिएट ज्वाइनर क्यों हो, उसमें क्या रिप्लाई? ना 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 ना, वो ऐसे नहीं पूछते यार, ऐसे तो कभी पूछा नहीं है कि इमीडिएट ज्वाइनर क्यों हो क्या नहीं। नौकरी पे अपना प्रोफाइल में मस्त लास्ट डेट डाल दो, ये मेरा लास्ट वर्किंग डे था, जो भी तुम्हारा ऑफिशियल लास्ट वर्किंग डे है। उनको बाकी ज्ञान दो ही मत कि निकाल दिया ये किया, तुम्हारी कहानी बताओ ही मत उनको। उनको बोलो कि आई एम इमीडिएट ज्वाइनर, वाई और ये सब क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो फट से टॉपिक चेंज कर देने का, नहीं पूछते फिर। ऑल्सो व्हाट अबाउट यू, कहाँ पे जॉब, कितना ईयर्स एक्सपीरियंस, जल्दी बता दो। सोने जा रहा हूँ भाई, जल्दी बता दूंगा तो मेरा वॉच आवर्स कैसे बढ़ेगा स्ट्रीम पे। जस्ट जोकिंग, मेरा 4.5 अभी 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल हो जाएगा अभी एक्सपीरियंस मेरा। मेरा रोल फ्रंट एंड डेवलपर का है, और कंपनी का नाम मैं स्ट्रीम पे नहीं बता सकता, वो मैंने देखा हुआ है, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे लिंक्डइन पे तुम जाके देख सकते हो, मेरा लिंक्डइन चाहे तो मैं पिन कर देता हूँ, मैं लिंक्डइन पिन करता हूँ, यू कैन गो एंड सी माई प्रोफाइल। इट्स पिंड। कूल, मेरा 11.5, बाप रे बाप, बढ़िया यार, तुम बहुत सीनियर बंदे हो फिर। यू शुड गाइड अस, नॉट द वाइस वर्सा। कंडीशन क्या लिखा था कि दोनों सेम है तब मिल जाएगा, लेकिन एक और कंडीशन है जिसमें गलत होगा। क्या था वो कंडीशन? फास्ट एंड स्लो, हाँ फास्ट और फास्ट, या ये फास्ट और स्लो में तो यही यही है। वाइल नहीं यूज़ करना था, क्या यूज़ करना था अपने को? इफ फास्ट इक्वल टू नल और फास्ट डॉट नेक्स्ट। बढ़िया यार, जॉब मिल जाए तो बताना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टू यू। मनी टेक्नो, अगर तुम्हारा नाम बता देते तो अच्छा हो जाता। मनी टेक्नो, क्या नाम है ये? मनी टेक्नो। हाँ लेकिन निकाला पहली बार है, मेरे पास एक ऑफ़र है, वो कह रहे नेक्स्ट वीक ज्वाइन कर लो, बट मैं वेट कर रहा हूँ एक और कंपनी के ऑफ़र का, अगर वो ज्वाइन कर ली तो ये कैसे? भाई ये सब इतना नहीं सोचना होता है। अगर देखो तुम्हारे पास एक ऑफ़र है, एक हफ्ते का समय है, एक हफ्ते में जितना हो सके उतना ऑफ़र निकाल लो, और फिर एंड में कंपेयर कर लेना, जो भी बेस्ट ऑफ़र है वो ज्वाइन कर लेना। कोई कंपनी तुम्हारी घर की सगी नहीं है भाई, उनको बेस अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा तो वो तुम्हें निकाल के दूसरे को ले लेंगे, उनको कुछ नहीं। थिंक अबाउट योर सेल्फ, उनको कैसे ना बोलोगे क्या नहीं, ये सब मत सोचो। उनका मत सोचो, तुम्हारा सोचो, जो भी बेस्ट ऑफ़र होगा वेट करो एक हफ्ता और ऑफ़र निकाल लो अच्छा, जो भी तुम्हारे लिए बेटर होगा वो चूज़ कर लेना, दूसरे कंपनी को बोलना थैंक यू। तुम निगोशिएट भी कर सकते हो एक ऑफ़र से दूसरे ऑफ़र को काउंटर ऑफ़र देके, लास्ट से सेकंड लास्ट डे पे भी तुम कर सकते हो, लास्ट डे तक कि नहीं मुझे कंपनी इतना इतना दे रही है, तुम मुझे इतना दे सकते हो तो बताओ, मैं आई विल जॉइन योर कंपनी। करने का भाई। इंटरव्यू से ऑफ़र आने में 3-4 वीक लग जाते हैं। नहीं, उनको सामने वाले एचआर को बोल के रखने का भाई, जो एचआर कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, उसको बोलने का कि मेरे दूसरे कंपनी का ऑफ़र जो है वो इमीडिएट ज्वाइनिंग का है, उसको जो डेट है उससे 2 दिन पहले का बोलने का। सपोज़ 10 तारीख है, उनको बोलने का 8 तारीख तक का ही। अगर आप 8 तारीख तक
पूरा प्रोसेस कर दोगे, ऑफ़र देते तो मेरे को बताओ, तभी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा। तो कर देते हो, एक्सपीडाइट कर देते। एचआर लोगों को तुमसे ज़्यादा टेंशन होता है वो जॉब फील करने का। अगर उनको पता है कैंडिडेट सही है, इंटरव्यू में तुमने क्लियर कर दिया, तो उनको लेना ही लेना है तुम्हें। फिर 3-4 वीक तब दे लगाते हैं जब वो और इवेल्युएट कर रहे होते हैं वो सब। तुम्हारे वाले केस में उनको बोल दो भाई, एचआर को फ़ोन करके कि सी माई सिचुएशन इज़ दिस, अगर आप ऑफ़र इंटरव्यू हो गया तो वेल एंड गुड। उनको बोलो कि 3-4 दिन में मेरे को दे दो, जो भी है वो दे देंगे तुम्हें। एटलीस्ट ईमेल वगैरह तो दे देंगे तुम्हें, और ऑफ़र बता देंगे। लेकिन जब तक ऑफ़र लेटर नहीं आ जाता, दूसरे कंपनी को डिच नहीं कर सकते तुम। लास्ट डे पे उनको भी बोल सकते हो कि 1-2 दिन की, नो आई ज्वाइन 2 days लेटर, वो थोड़ा इशू है, ऐसा वैसा कुछ बोल सकते हो। while not while fast not next, क्या करना है, if fast equal to slow, देन, अरे अपने क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया भाई। चलो भाई, यू कंटिन्यू, मैं चला। नाइस टॉकिंग टू यू, लाइक करके जाना भाई, इतना डिस्कशन किया है, डू लाइक द स्ट्रीम। नाम नहीं बताया तुमने, ठीक है, लेकिन स्ट्रीम लाइक करके जाना। यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन लिंक्डइन, देयर इज़ नो इशू। अगर तुम्हें प्रॉब्लम आता है ना, आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, तो आपको कुछ इशू वगैरह आता है तो यू कैन पिंग मी ऑन लिंक्डइन, आई कैन आंसर यू देयर, देयर इज़ नो इशू। ओके, थैंक यू। क्या था अपने को क्या करना है, अगर फास्ट एंड स्लो ये मिल जाएगा तो अपने को रिटर्न करना है, रिटर्न फास्ट। हमेशा हम फास्ट ही रिटर्न कर रहे थे, एल्स क्या करना है, फास्ट। मेरा नाम है खुद। सो जाओ भाई, तुम्हें नींद की ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा। फास्ट इक्वल टू क्या आएगा, फास्ट इक्वल टू वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, फास्ट इक्वल टू हेड, then fast equal to fast dot next, slow dot next. bye bye. फास्ट इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट है मेरे ख्याल से, स्लो डॉट नेक्स्ट, एंड स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एंड में कुछ नहीं मिलता है तो रिटर्न नल। आई थिंक दिस इज इट। रॉन्ग आंसर, क्या गलत है अपना, स्लो फास्ट डॉट फास्ट इक्वल टू स्लो रिटर्न फॉल। स्लो फास्ट नॉट इक्वल टू नल, और फास्ट और नॉट, देन इफ दिस
आई एम लाइक स्ट्रीमिंग न्यू, बट फिर भी लोग आके इतना बात करके जा रहे हैं. आई एम फीलिंग लाइक वाह, समथिंग डिफरेंट. फ्लॉयड्स एल्गोरिथम बोलते हैं इसको ना. फ्लॉयड एल्गोरिदम याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये एंड होता है, ये और नहीं होता है. एंड क्या गलती है इसमें? ये गलत है मेरे ख्याल से. लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि वो फास्ट का ही नेक्स्ट है? ये बाद में आएगा क्या भाई? ये प्रॉब्लम से फ्लॉयड प्रिंसिपल दिमाग में छप जाना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा ऐसे ना. अरे अरे, ये सही हो गया, ये सही हो गया. मतलब बाद में कंपेयर करना है. क्या गलती है भाई साहब, बताओ बताओ ज़रा. टेल connects to this 1 2 pause 0 means yeah 1 2 and this. So क्या गलत कर रहा हूँ भाई इसमें मैं? अबे यार, ये भी स्लो ही हो गया ना. ये चाहिए नेक्स्ट ऑफ फास्ट का नेक्स्ट चाहिए भाई. 2 घर आगे, फिर उसके 2 घर आगे. फेज 2 फाइंड द एंट्री ऑफ द साइकिल. ये क्या है बकवास है भाई? ये नहीं लग रहा दिमाग. लास्ट एडवाइस भाई, इन सब चक्करों में मत पड़ो. गर्लफ्रेंड बनाओ, ट्रैवल एंजॉय, फास्ट लो तो उतरेगा. भाई तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलो करना चाहिए फिर. आई हैव ट्रैवल्ड सम कंट्रीज. मैं घूमता हूँ, ये करता हूँ, सब कुछ ही करता हूँ. सब कुछ करना ज़रूरी है भाई. ये सब करेंगे तो वो सब करने के लिए पैसा मिलेगा. ये सब नहीं करेंगे तो वो सब भी नहीं हो पाएगा. लगे कि जैसे खूबसूरत पल तू जो है साथ मेरे तो टकर. लगे कि जैसे खूबसूरत घर तू जो है पास तो ये अंबर. लगे कि जैसे साया हो सिर पर. अरे यार, यहाँ तक तो पहुँच गए भाई. इसके आगे भी कुछ लॉजिक है, ऐसा ये बोलना चाह रहा है.
एंट्री पॉइंट क्या है भाई इसमें? एंट्री पॉइंट नहीं समझा मैं लॉजिक. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एंट्री पॉइंट हियर? व्हाट इज दिस एंट्री पॉइंट? कहाँ लिखा था ये? व्हाट्स द एंट्री पॉइंट? अगर कोई मुझे समझा पाए एंट्री पॉइंट क्या है यहाँ पे. व्हाट्स आई एम गेटिंग मैसेजेस ऑन दिस. log into paste image. log in with Google. मेरे को ईमेल मत भेजना भाई. अभी स्लो हो जाएगा. स्लो हो जाएगा भाई. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. ऐसे फास्ट जाएगा अपना. फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट. ये जाएगा यहाँ, फिर जाएगा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. So they are meeting at 4. They are meeting at this point. So ये एंट्री पॉइंट का क्या सीन है भाई? कोई समझाएगा मुझे ये एंट्री पॉइंट क्या है? Why this is confusing? दोनों अगर एक समान मिल गए तो हो गया वहीं पे. तो फिर क्या बाकी रह जाता है? Continue this traverse fast dot next reaches the end of the linked list, that is becomes null. In this case there is no loop in the linked list and the algorithm terminates by returning null. Okay, this is easy. Fast and slow pointers meet at the same node. This indicates the presence of loop in the linked list. Reset the slow pointer to the head of the linked list. Reset the slow pointer to the head of the linked list. Move fast and slow one step at a time until they meet again. Why slow को अपने को करना पड़ेगा reset? The point where they meet again is the starting point of the loop. You may be curious about the proof for this algorithm, and it hinges on the idea that the point where the slow and fast pointers converge can be leveraged to determine the starting point of the loop. In the starting point of the loop,
If slow has traveled distance L1, then the fast has traveled 2 into L1. Now that slow and fast have entered the loop, the distance fast will have to cover to catch up to slow is the total length of the loop minus L1. Let this distance be d, distance traveled slow, L1 distance traveled by fast is equal to 2 into L1 total length of the loop, L1 plus d. In the configuration, so in this configuration, the fast pointer advances towards the slow pointer with 2 jumps per step, while the slow pointer moves away with 1 jump per step. As a result, the gap between them decreases by 1 with each step. Given that the initial gap is d, it takes exactly the d steps for them to meet. समझा ये मैं. Total length of loop is equal to L1 plus d distance between slow and fast, which is t. During these d steps, the slow pointer effectively travels d steps from the start. Slow pointer बाहर आता है. स्लो पॉइंटर बाहर कैसे आता है भाई? स्लो पॉइंटर यहाँ आया, फिर यहाँ आया. सॉरी. स्लो पॉइंटर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया. बाहर कैसे आएगा? फिर यहाँ आया, then here, and it is fast pointer यहाँ, then यहाँ, then यहाँ, then यहाँ, then यहाँ. Fast pointer is moving inside only. बाहर कैसे आया और लूप क्या करना चाह रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा. कहना क्या चाह रहे हो भाई? मेरे को डिस्टेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है. तुम्हारा कितना डिस्टेंस है, क्या है, अपने को चाहिए बस कहाँ पे मिल रहे हो और वो क्यों फेल हो रहा है यहाँ पे. इफ फास्ट इक्वल टू स्लो, रिटर्न फॉल्स, दैट्स इट. ये क्यों गलत हो रहा है? मेरे को ड्राई रन करके देखना पड़ेगा यार. अब नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी. गाइस प्लीज लाइक द स्ट्रीम यार. कल ऑलमोस्ट 15 लाइक्स हो गए थे ये टाइम तक. आज इतने कम लाइक्स क्यों हैं भाई? Guys who are all watching the stream and new, please do like the stream because I want to connect with the same minded people who can help me, who can also want to learn something in coding, so we can learn together. So that's why it's very necessary to like the stream, so please do hit the like button. I'm sounding very cringe but it's necessary. नॉर्मल अप्रोच से अपना हो गया था काम, लेकिन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था बिग ऑफ n, बट नाउ वी वांट बिग ऑफ 1. मे बी इट कैन यूज एक्स्ट्रा स्पेस. ओह शिट, दैट्स नॉट एन इशू. बट मेरे को कोई समझाएगा. ये फास्ट एंड स्लो मिल गया तो मिल गया, वहाँ पे मिल गया अपने को वो नोड जहाँ पे वो साइकिल हो रहा है. तो इसके आगे क्यों? I'll show you what ChatGPT is showing. Meeting point inside the cycle. Why we need to check again when we already found match at this point
and it is done. The most important question in the whole topic, if you understand this, Floyd's algorithm is locked in for life. Okay, मैं फ्लॉयड algorithm में ही गलती कर रहा हूँ क्या? Short truth then deep intuition. When you do fast slow, you have only proved that cycle exists. You have not find where the cycle starts. Why we need where the cycle starts? मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों को चैट जीपीटी भी दिखाना चाहिए क्या बोलना चाह रहा है. कैन यू सी दिस ऑन द स्ट्रीम? ए भाई मेरा बाकी चैट मत देखो. You do not have where the cycle starts. Why I need to know where the cycle starts? Meeting point not equal to cycle entry. Visual intuition, no math yet. Example 1 2 3 4 5 4 5 meets 2. Cycle starts at 2. Slow and fast meet at 4 or 3 or 5 depending on timing. But the question asks return the node where the cycle begins. That is 2 not 4. Is it? One slow pointer will move from here like 1 2 3 4 5 and then 2 3 4 5 2 3 4 5. Okay, and the fast pointer this here we meet. No, ये कुछ तो है, इसको एक बार इटरेट करके देखते हैं ना. स्लो जाएगा ऐसे 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 ऐसे. अबे ऐसे देन ऐसे. फास्ट जाएगा अपना, फास्ट जाएगा ऐसे. 3 पे मिले, 5 पे मिले, फिर 5, फिर 3 पे मिले, फिर 5 पे मिले, फिर 3 पे मिले, फिर 5. तो 3 पे तो मिल ही रहा है ये. फिर लेकिन 3 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है यार अपने लूप का. मतलब हम ये 3 रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि 3 पे मिला, लेकिन ये गलत है. अब कैसे गलत है ये? ओके, क्या कहना चाह रहे हो? साइकिल स्टार्ट्स एट 2, अंडरस्टूड. स्लो एंड फास्ट मीट एट 4 और 3 और 5 डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग. अबे वो 3 पे ही मिट कर रहा है. मैं गलत किया क्या? 3 5 2 1 2. 3 पे मिला, फिर 5 पे गया, फिर 2 3. अभी 3 पे ही मिल रहा है. 4 पे तो नो चांस उसको मिलने का.
but the question asks return the node where the cycle begins, that is 2 not 4, so stopping at the first match gives the wrong answer. Why the meeting is random? Inside the cycle, slow moves +1, fast moves +2, so the fast gains 1 node per step relative to slow. They meet wherever that gap becomes 0. That depends on cycle length, entry position. Why the second walk works? Guys, I'm tired I guess at this point ना. मैं वो एंट्री पॉइंट का लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है, सो नॉट एन इश्यू, बट हम इसको मी परत येणार. एक बार देख लेते कितना सॉल्व किया. मेरे ख्याल से 24 हो गए क्वेश्चंस. सीरीज इज कंटिन्यू. ठीक है. 24 2 attempting means 26. Okay, we are progressing, we are doing some progress which is good. स्टैट्स इजी ही सॉल्व किया हमने. मीडियम 10 सॉल्व किया विच इज़ नाइस. 14 हमने इजी सॉल्व किया और 10 मीडियम सॉल्व. हार्ड एक भी सॉल्व नहीं किया. हार्ड इसने बोला हुआ ये करने के लिए. सो जावा लर्निंग में मैं बुक मार्क कर लेता हूँ इसको और इसको भी. तो कल हम आके ना इसको सॉल्व करेंगे. अभी मेरा दिमाग से थोड़ा सा ऊपर जाना चालू हो गया. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये 3 पे मीट हो रहा है, ChatGPT बोल रहा है 2 और 4 पे मीट हो रहा है. ChatGPT बोल रहा है 2 और 4 पे मीट हो रहा है साला, और ये हो रहा है मीट बस 3 पे, और 3 आंसर ही नहीं है और 2 आंसर है इसका. कोई मुझे इमीडिएटली समझा सकता है विद इन 2 मिनट्स तो मैं करूँगा, नहीं तो हम इसको कल करेंगे. As simple as that. And please guys do like the stream, that is the most required part. I want to connect to the similar minded people, and there is a community on this channel, so let me get to there and show you guys this. कहाँ गया community? A visit community. Okay, my community. So there are people, you can come and come and ask any questions. There's no issue I guess. Okay, this is a community. You can visit the community. I can spam this link. Yeah, I can spam. I am the owner of the stream. Why not? Okay, so is there someone new here? Yeah, I spammed. Sorry for that, but it's okay. चलो, I have to end the stream. मुझे सोना भी है, कल उठ के काम भी करना है. So good night.